Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we will solve question number 2 of exercise 11C. And let's start. See question number 2. Find the value of the unknown in each of the following right-angled triangles. In last exercise, we have done with the unknown sides of a right angle triangle. Now we have given right angle triangles, but we have to find out the unknown angles. We have given sides in the right angle triangles and we have to find out the unknown angles in a right angle triangle. So let's move to its solution. In the same way, we will apply trigonometric ratios and we will find the unknown angle. See how in this right angle triangle A, we have given a side opposite to the angle perpendicular. We have given perpendicular and hypotenuse of a right angle triangle in part A. So recall the trigonometric ratio, which is equals to perpendicular upon hypotenuse is the sine ratio. So यहाँ पर हम इस पर sine ratio apply करेंगे. So sine A is equals to 12 upon 26. Right? Now in the first question, we have learned about how we calculate angle. अब हमें यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना है. साइन रेशियो हमने लिख दिया है, उसकी इक्वेशन, इसकी स्टेटमेंट हमने लिख दी है. अब हमें ये अननोन एंगल इस यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल कि साइन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे. इट विल बी साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा और हम इसको बहुत इजीली आप कैलकुलेट पर इसको मालूम कर सकते हैं एंगल ए को. तो साइन इनवर्स 12 अपॉन 26 पर होता है 27.5 डिग्री. सो वी हैव ए इज इक्वल्स टू 27.5. नाउ सी बी पार्ट. वी हैव गिवन साइड adjacent to the angle and hypotenuse. So here is a cosine ratio which is equals to base upon hypotenuse. So cos B is equals to 10 upon 17. So अब यहाँ पर we will solve in the same way. We will take this cosine to this side. It will be inverse of the cos inverse. So B is equals to cos inverse 10 upon 17. So we will divide 10 upon 17 and we'll take the inverse. Cos inverse. So we have the value of B is equals to 54 degree. ठीक है, और therefore B is equals to 54. So this is the answer. And the remaining parts, we will solve all the remaining parts in the same way. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे.